So, do you really believe that all these things are connected to past life? We are a sum total of our past lives. आपने ये सुना ही होगा, सब बोलते हैं हमारा कर्मा कर्मा, हमारा पास्ट कर्मा, राइट, पिछला कर्मा. तो ये कर्मा क्या है? लोगों को यही लगता है ना कि स्पिरिचुअलिटी मतलब मंत्र चैंट करो, लाइक you actually have to sit in front of idol and then do that prayer and all. So when you're talking about spirituality, it's a lot different thing. That's idol worship. That's being ritualistic. You can definitely choose to do that. If it's working for you, you can choose to do that. But आप मेरे को सच्ची बताओ, कितने लोग ये actually में इस चीज को करते हैं? Do you really think this spirituality and this healing and all of it is quite connected to our past life and our ancestors? Ancestors, it's almost taken us 400, 500 ancestors to be here today, right? So to say that, it's not a part of us, I think would be actually wrong, because you're dishonoring the fact. Running behind wants and needs and lot of things. But end of the day, what is important is your soul, what your soul wants. तो आपको मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स इन लाइफ चाहिए, तो हम इतना मनी को दूर क्यों कर रहे हैं, या हम बेचारे मनी को इतना बुरा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि टेक्निकली आप उसी के लिए तो आए हो. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में. आज की जो हमारी गेस्ट है, who purely believes healing is not a weakness, it's a leadership of self. So let's welcome our guest, Kritika Khurana. Hi, Nirali. Thank you so much for having me here. I think, Anna itself was guided, क्योंकि मेरे को नहीं पता था till a very long time कि आप ने ये स्टार्ट किया है. रैंडमली एक दिन ये मेरे इंस्टाग्राम पे आया एंड आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, एंड आई थिंक उसके बाद within 10 days I'm sitting in front of you. Thank you so much for accepting our invitation and being there today all the way. And somewhere I feel it's a calling from universe, because I also believe a lot in healing. Okay, and your journey and your story is quite relevant to mine. So I mean, definitely this entire podcast is going to have lot of learnings for all the viewers as well. I'm sure. So since this entire podcast is about एक सोच, okay, एक सोच, one idea that changed your life. कहते हैं ना, लाइफ में कोई भी चीज आप करते हो वो एक सोच से ही शुरुआत होती है, right? So we really want to understand how your entire journey into soul-led guide started, and how did you transform yourself? I think मेरे लिए ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में. मैं बोलती हूँ 2019, but of course it was already there, वो प्रोसेस में था. मेरी रियलाइजेशन में आई थिंक 2019 में आया, when I had my pregnancy, and वो प्रेगनेंसी इटसेल्फ इतनी डिफिकल्ट थी कि मेरे को हर एक टाइम पे ऐसे लगता था कि आज गया, टुडे इज लाइक द लास्ट डे, इट्स द गिव अप डे, एंड फिर कुछ नया होता था जो मुझे इस चीज के लिए पुश करता था. सो आई थिंक मेरे लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो मेरी डॉटर है, her name is Sanaita, which means reborn to us. And that itself, I think, is she is the turning point in my life, and she is the one who has, I think, started me and has been my awakening to this whole process. And it's been a journey. I don't think it's overnight, because every day with her was a learning, and I think उसी learning से मैं आज यहाँ हूँ. Correct. So you said that your entire life changed after your pregnancy. So what was that one calling which pushed you that नहीं, आज तो अब मैं कुछ और नया करना चाहूंगी? So इसकी बैकग्राउंड ये है कि मेरी प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे को, आई हैड ऑलरेडी कंसीव्ड ट्विंस, एंड सो मेरे लिए आई थिंक लाइफ जस्ट गिव मी एवरीथिंग इन वन गो. आई वॉज द हैप्पीएस्ट सोल हु थॉट यही मैंने मांगा था, यही मुझे मिल गया, टिल आई रियलाइज इट वॉजंट व्हाट वॉज द रियलिटी, बिकॉज आई लॉस्ट वन इन द थर्ड मंथ इटसेल्फ, एंड देन वी हैड टू कीप पुशिंग थ्रू टू एंश्योर दैट द वन हु इज सर्वाइविंग is born healthy, right? And at every point, there were doctors who told me this is a losing battle. Like, I've had doctors tell me in medical language that this is a losing battle you're fighting, and just give up, because we're in India. And legally speaking, I think till 20 weeks we can do this. Otherwise, you give birth to a stillborn. So you can't abort after that, and then you have to go through a whole process. So I said that this is not happening. Agar heartbeat hai, I will keep going. Now, I don't know what told me I will keep going.
Something told me I will keep going. मुझे spirituality का S भी नहीं पता था. Healing का H भी नहीं आता था. I only knew one thing which I was constantly into was, I think, chanting even in those days. So I used to just chant the mantra that would come to me. And I don't know how, but I even picked up chanting what we call as the Ekonkar in the Gurdwara, right? So the entire Japji Sahib I would chant, whereas I'm actually not a Sikh. So it doesn't come to me naturally. I'm a Punjabi, but we are not Sardars who know Gurbani or anything. The fact that, I would read it and I would still get it was itself a miracle to me, because मेरे को उसका मतलब genuinely में नहीं पता था. For me, मैंने बचपन से I think गायत्री मंत्र सुना है. तो वो naturally आता है, पर ये नहीं आता है naturally. And to remember it in one go was itself telling me something is working for you. कुछ तो है जो तुमको यहाँ तक लाया है. And every time that people would tell me you're losing this thing, I would say यहाँ तक पहुंची हूँ ना, तो आगे भी पहुंच जाऊंगी. एंड यही हुआ. मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स आए हैं उस टाइम पे, मैं ढूंढ नहीं रही थी, पर ऐसे ऐसे डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन आई हैं जिनकी एक्सपर्टीज ही यही थी. So I think I was in Bombay when I mean my in-laws live here, but I moved to Ahmedabad for those many months to my parents' house. And everything completely changed for me. The sign on the hospital where my daughter was kept also said small miracles, big miracles in small packages. And that line itself told me, this also they have told me to come here. Correct. I'm not here just by chance. Mm-hmm. So, उन डॉक्टर को भी मैंने देखा है, वो हिंदू हैं, बट वो नीचे बैठ के ऐसी प्रार्थना करते थे, क्योंकि he would just say one thing कि अगर भगवान ये बच्चों को मेरे पास ला रहे हैं तो मैं उनके भगवान को कांटेक्ट करूं ना. And that really hit me, like that man is talking sense. So yeah, I think it began from there. So do you really believe that all these things are connected to past life? Absolutely. Because what I believe is that we are a sum total of our past lives. ठीक है. आपने ये सुना ही होगा, सब बोलते हैं हमारा कर्मा, हमारा पास्ट कर्मा, राइट, पिछला कर्मा. तो ये कर्मा क्या है? इन माई लैंग्वेज इफ आई हैव टू डिफाइन इट, एक बैग है. ठीक है. इस बैग को हम कर्मा का नाम देते हैं. इसमें आपके अच्छे बुरे सब कुछ हैं, राइट. तो आप वो सब लेके यहाँ आते हो. एंड एक्चुअली इफ यू गो डीपर, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और मेरे लिए यहाँ पे है. एग्जैक्टली. बट राइट देयर एट सोल लेवल, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ चल रहा है फॉर ऑल यू नो. ये हमारी अर्थ का कॉन्सेप्ट है कि पास्ट इज पास्ट एंड प्रेजेंट इज राइट नाउ एंड फ्यूचर आने वाला होता है. बट एक्चुअली एवरीथिंग इज रनिंग एट सोल लेवल टुगेदर. So you don't know, you and me are here, a part of us is also somewhere else. Correct. So I think we're carrying everything here. We don't come, your masters, your guides won't send you empty handed. True. They send you with everything that will help you to live your life on earth the way that you want to live it. क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी आपने ही लिखी है ना. हाँ जी. भगवान ने तो आपके लिए लिखी नहीं है. बिल्कुल. तो ये स्क्रिप्ट में आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं, आपकी पूरी स्टोरी लिखी है, और यही स्टोरी आप एनेक्ट कर रहे हो. जैसे मूवी चलती है, एग्जैक्ट सेम वे आप अपनी स्टोरी यहाँ चला रहे हो. ओनली डिफरेंस इज आपको एक ट्रम्प कार्ड दिया जाता है जो आप कभी भी यूज कर सकते हो. वो है फ्री विल. कि अगर मुझे कुछ मेरी लाइफ में से चेंज करना है तो आई शुड हैव द लिबर्टी टू चेंज इट. ये नहीं होना चाहिए मैं वहां जाके अटक जाऊं, क्योंकि फिर मैं कहाँ देखूंगी अर्थ पे आके. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट दिस होल पाथ आल्सो कनेक्ट्स यू टू. But then, we are so much into this materialistic world, right? We are on and off, running behind wants and needs and lot of things. But at the end of the day, what is important is your soul, what your soul wants. Right? So would you like to throw some insights on that? सी अगर आपने ह्यूमन बर्थ लिया है ना, ये और ये सबके लिए है, तो आपको मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स इन लाइफ चाहिए. यू हैव टू एक्सपीरियंस देम. यू आर हियर टू एक्सपीरियंस देम. तो हम इतना मनी को दूर क्यों कर रहे हैं, या हम बेचारे मनी को इतना बुरा क्यों बना रहे हैं? Exactly. क्योंकि टेक्निकली आप उसी के लिए तो आए हो. अगर आप अर्थ पे हो, ह्यूमन बर्थ लिया है आपने, तो ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम होती है. वो नर्वस सिस्टम एक्सपीरियंस करती है इमोशंस. And money, I always say there are three things. It's money, love, and sex. 3 energies in life. You experience them
And that is what actually gives you and keeps you going, because that's the only thing you can feel in the body. Yeah. Once the body is gone, बाकी सारी emotions तो आपको फिर भी feel होंगी. I tell this to my clients a lot. They'll say, but my father-in-law was not a person. They'll come for sessions and they'll say कि नहीं वो ऐसा नहीं बोल सकते, मेरी mother ऐसा नहीं बोल सकती. ऐसे आपको क्यों लगता है कि अगर वो यहाँ से चले गए तो वो ऊपर जाके क्या बुद्धा बन जाएंगे? I mean, जो जैसा होता है वो soul form में भी वैसा ही होएगा. Doesn't mean कि आप यहाँ से ऊपर जाके suddenly enlightened हो जाओगे. तो अगर आपकी soul was always a very light hearted soul, आप मरने के बाद भी वही रहोगे. आप suddenly कुछ बदल नहीं जाओगे वहां जाके. आपकी progress होगी. But जब आप अपने loved one से बात करोगे, आप वही होगे जो आप हो. You can't become from Buddhu to Buddha just because you went from earth to soul level. It's not like that. Your soul progresses, no doubts about it. क्योंकि वहां पे भी हमारी पढ़ाई लिखाई सब चल रही होती है. But the fact is that your loved ones knew you a certain way. They will still connect to you the same way. So to say नहीं मेरे पापा इतना गुस्सा नहीं कर सकते, नहीं क्यों नहीं कर सकते, ऊपर से भी कर सकते हैं. Exactly. Right? Still that. Absolutely. And I've always, heard that, there is life after death. Always heard that. And I've always, whenever we have been through that entire cremation process and all, whenever you go to Smashan, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लिखा रहता है. This is not the end, right? There is a journey after this. So this is the reason maybe people keep saying that जो नहीं है, उनको आप याद करके उनको अभी भी आप होल्ड कर रहे हो. I think वहां पे मैं थोड़ा सा मतलब I would like to share this कि उनको याद करके आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो, because ideally वो हमेशा फ्री ही बैठे हैं आपसे बात करने के लिए. बट फिर हम लोगों ने ही इसको एक कॉन्सेप्ट एक ऐसे टैबू बना दिया है कि जो चला गया है उसको ऐसे मत याद करो, ऐसे ही याद करो, या उसको वो ही मदर जिसने आपको बर्थ दी या वो ही फादर अब यहाँ पे फिजिकली नहीं है और वहां से आपको कोई गाइडेंस कुछ मैसेज कुछ भेज रहा है, पर आप उस चीज से डर रहे हो. Why? Just because the body is not talking to you. And it is untrue. People say that this only happens at night, etc. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो दिन में आपसे बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिन में हम बिजी हैं. नाइट आप रेस्ट कर रहे होते हो तो शायद आपकी ड्रीम स्टेट में उनको वो मौका मिलता है कि शायद ही अब मेरी वो बात सुन ली जो मैं इनको इतने टाइम से बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ. सो उनको आप होल्ड बैक नहीं करते हो. हाँ, होल्ड बैक वो लोग तब होते हैं जब आप बिल्कुल ही उनकी सोल को आगे प्रोग्रेस नहीं करने देते हो. आपने बोला लाइफ आफ्टर डेथ, राइट? सो ये मुझे बहुत रिसेंटली, मतलब पहले मुझे डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था, एंड ऑफ कोर्स फेयर था, राइट, कि यू कांट डाई लाइक दैट. But ever since I lost my grandfather and I was initiated into soul communication, I actually realized that he's living a better life there. He is really living a life. He's actually working on himself, doing all those things he could not do in his body because his body did not support him. He's able to do it from there, and which means he is in a better space. Correct. And actually, if you ask me, coming on earth is a very difficult choice you're making because it's not easy to be here. And once you're here, आपको वापस जाने की बहुत जल्दी होती है. After your responsibilities and duties are done, सब क्या बोलते हैं, अब भगवान मुझे ले लो, भगवान मुझे ले लो, राइट? भगवान ऐसे क्यों आके लेगा? भगवान ने नहीं भेजा और नहीं भगवान आपको ले सकता है. भगवान ने आपको वो चॉइस दी, आपको कब आना है, और जाने की भी चॉइस आपकी ही होगी. So you don't hold anybody back unless you're actually stopping them to progress at soul level. Correct. That is something I would always even tell people that, everyone has a life even after their physical body is gone. Let them do what they have to do. Correct. Instead of, holding them back. They might want to, work and come back. और अगर आप डोरवे नहीं उनके लिए खुला रखोगे तो वो वापस कैसे आएंगे? Exactly. So Kritika, how did you view this entire journey of spirituality before even you started, stepping into it? I think I used to think that आपको एक माउंटेन पे बैठना पड़ेगा and साधु संत कपड़े. I mean, I really thought spirituality means family life छोड़नी पड़ती है. आप ऐसे ही उठ के कोई spirituality में नहीं घुस सकते हो. एक एज होती है, एक certain आप लाइफ में पहुंचते हो, तब जाके शायद आप spirituality को देख सकते हो या आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. क्योंकि
ऑल्सो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी वाज सिनोनिमस. मुझे लगता था ये दोनों का सेम मीनिंग होता है. ऑफ कोर्स वो बबल मेरा बहुत पहले ही टूट चुका है, क्योंकि मेडिटेशन इज नॉट इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इक्वल टू मेडिटेशन, एंड देयर इज मच मोर टू दिस, बिकॉज टू मी स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट यू आर लिविंग, इट्स योर प्रेजेंट. सो दैट इज व्हाट इट इज. इट्स नॉट अबाउट मैं स्पिरिचुअल हूँ पर मैं ऑरेंज कपड़ों में नहीं बैठती हूँ, ना ही मैं पूरा दिन एक माला लेके बैठती हूँ, और ना ही मैं पूरा दिन ध्यान करती हूँ. सो पर मैं स्पिरिचुअल हूँ, यस, because I believe that, I am creating a life every day with my actions that I'm choosing to live or I'm desiring, and that is what is. So most of the time लोगों को यही लगता है ना कि spirituality मतलब मंत्र chant करो, like you actually have to sit in front of idol and then do that prayer and all. So cut to when you're talking about spirituality, it's quite a lot different thing. Absolutely. That's idol worship. That's being ritualistic. You can definitely choose to do that. If it's working for you, you can choose to do that. But आप मेरे को सच्ची बताओ, कितने लोग ये एक्चुअली में इस चीज को करते हैं. लिटरली में दे आर जस्ट लुकिंग एट द आइडल चैंटिंग. उनको मतलब भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं. मैं एक्चुअली मेरे घर में मैं मेरे हस्बैंड को भी ये खुद बोलती हूँ, आप हर रोज एक जोत जला के बाहर चले जाते हो, लिटरली रनिंग. लाइक 1 मिनट अगर आप विद अवेयरनेस वो ही चीज करोगे, आपकी पूरी माइंडसेट चेंज हो जाएगी. क्योंकि द मिनट यू आर इन अवेयरनेस, you have moved out of the idea of being ritualistic, of being superstitious, of being, whatever those labels are, because then you are using your consciousness in that moment. And spirituality is when you are in awareness. Exactly. So when you said, I really want you to burst this myth of difference between spirituality and meditation. Because according to me also, मतलब मैं भी अगर सोचती हूँ meditation करना, तो it is basically to relax yourself, to relax your mind and calm and soothe yourself. I also thought that it is somewhere connected to spirituality. So can you just throw more insights on that and break that myth कि यार ये दोनों भी same है? So I think spirituality has a lot of tools. जैसे हमारे पास जैसे religious fields में इतने सारे tools हैं, right? आप पूजा कर सकते हो, आप चैंटिंग कर सकते हो, आप मंदिर में जा सकते हो, मल्टीपल थिंग्स आप करते हो. सेम वे आप स्पिरिचुअलिटी में मल्टीपल टूल्स के द्वारा आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो. विच मीन्स उसके लिए शायद आपको पास्ट लाइफ भी हील करनी पड़ेगी, आपको अपने एंसेस्टर्स से भी बात करनी पड़ेगी, आपको अपने चॉइसेस भी बदलने पड़ेंगे, आपको अपने खुद के अंदर भी झांकना पड़ेगा. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. एंड अंदर झांकने के लिए मेडिटेशन एक तरीका है आपके लिए. मेडिटेशन इज नॉट कि मेडिटेशन करने से मैं स्पिरिचुअल हो गई और मेरी लाइफ ठीक हो गई. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड इट विल काम यू, जैसे आपने बोला, इट विल रिलैक्स यू. बट क्या आपकी प्रॉब्लम्स इससे खत्म हो जाएंगी? सो बेसिकली आपको ये जो टूल्स दिए गए हैं, एंड ये सबके पास है. सो दैट इज, आई थिंक, व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. व्हेन यू आर चूजिंग टू मेक योर करंट बेटर. एक्चुअली सी निराली, वी आर ऑल लिविंग इन ईदर द पास्ट और द फ्यूचर. मेरे को ना आगे के लिए इतने पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा, ये हम प्रेजेंट में तो जी ही नहीं रहे हैं. जैसे ही आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करोगे, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या ये वर्ड स्पिरिचुअल जो है वो आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि इसका भी मेरे पास एग्जाम्पल है. लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक, व्हाई इज शी गिविंग दिस एग्जाम्पल? बट लाइफ पॉलिसीज, funds, mutual funds, all these things. So once my husband came and told me, can you sign these papers because we have to make a policy? I said, great. So he's saying, it's this amount, some 2 lakhs something. So I said, so who's deciding the value of my life is 2 lakhs? He's saying, no, nobody's deciding that. I said, you? He's saying, no. So I said, then why did you write this amount? He's saying, that's how it's done. I said, just explain to me. Now, after this, what's going to happen? He's saying, this will keep accumulating, and then after 20 years, this will mature, and then you'll get this money. I said, wow. And if I die before that, so my daughter should just wait, Mama die, so that I get your money, right? So he's saying, no, that's not the thing. I said, that is the thing. क्योंकि अब मेरा बच्चा तो यही वेट करेगा, राइट? मम्मी मरे तो मुझे मम्मी के पैसे मिले. करेक्ट. ऐसे अगर यही पैसे आप आज यूज कर लोगी, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बट हमको वो कंडीशनिंग कभी है ही नहीं. हमको ये बोला है, जो आप आज बना रहे हो उसको
सेव करके रखो फॉर अ रेनी डे. अरे वो रेनी डे आएगा ही नहीं. फॉर ऑल यू नो आप उस रेनी डे से पहले ही चले जाओगे. व्हाट विल यू डू देन? So I'm not against policies. I'm not against all of this. All I'm saying is, if you make a little shift in your mind to say, if I can enjoy this right now, believe me, you have already become a spiritual person. You have realized, you are in the awareness that today I can make my day better. And that itself is enough. You don't have to do big things. You don't have to know past life. You don't have to, know tarot. You don't have to do Akashic readings. Nothing. The fact that you've realized I can make today better for myself is spiritual enough for you. Correct. So I have been through this I've experienced it recently. So few days back, I started meditation. Okay, because I thought I need to cut everything and then be in my own space and all. I believe a lot in Neem Karoli Baba. So it so happened I started with my meditation. As soon as I opened this book, he's like, you don't need to meditate to connect to yourself. Okay, you can meditate wherever you are. You should be in meditation position. Okay, so even if you're not doing it, your soul is already doing it for you. Right? So that point of time, I really didn't understand that, what message is coming to me. But then eventually I realized that, yes, that's a fact. You don't actually have to sit and, be in that space. You really need to connect yourself. और वो ऑरा भी होती है ना, you try and connect with the people. सामने वाले को पता चलता है इनकी ऑरा क्या है. So right now it is very much connecting to me that, something like this is also there. Yeah, absolutely. Not always you have to sit and meditate. If you're just present in what you're doing, like we are doing this conversation right now. The fact that you are present in this conversation, I'm present in the conversation, we are in awareness. Right? इसी टाइम पे अगर आपके पास 100 दूसरी चीजें दिमाग में चल रही है, अरे इसके बाद कौन सा क्लाइंट है, इसके बाद ये क्या करना है, which means आप ऑलरेडी भटक चुके हो. Exactly. So अब इसके लिए अब आपको आंख बंद करने की जरूरत है नहीं, not always. And meditation can happen even with open eyes. There are people who are practicing meditation even with open eyes. We shut our eyes only because eyes हमको वो सब चीज दिखाती रहती है, and क्योंकि हम देख के उसको images को brain में process करते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं आंख बंद कर लो, so that आपको बाहर की दुनिया दिख नहीं रही है, and आप सिर्फ for those many minutes आप अंदर देख सको. But actually आप अंदर देखने के लिए, there's a very beautiful practice. I mean, I enjoy this practice which is called journaling, right? You can look within yourself even when you're journaling, because every time that you're writing something down, you're actually connecting to yourself only. You're letting everything from inside you come out on that paper, which is also a form of meditation. You are still working on yourself. Absolutely right. I really want to understand what is the process when you start, you want your client to implement. Okay, what is their journey and how do you start with your entire process of soul-led guidance? So what I believe is the first thing when somebody comes, so if somebody's come to me with telling me their problem already, they already know their problem, we go dive deeping into that problem, right? But अगर किसी को problem नहीं पता है and they've just come saying कि I need help, I just need help, मेरी life में बहुत कुछ इधर उधर चल रहा है. So what we do is basically, and I'm saying we because I work with the partnership of my guides, my masters, right? And we go into the Akashic Records. Akashic Records is basically a place, हमारी एक soul library है, आप समझो. At soul level एक library है, जहाँ पे हमारी सारी lifetimes के records हैं. Okay, so it's like a big place where we access, and हम उसमें से आपके current life की, मतलब मेरा जो first step होता है इस lifetime का soul script access करना, और उसमें देखना और उस person को बताना कि आपने ये जो भी problems choose करी हैं ये आपने खुद choose करी हैं, क्योंकि उस person को जानना बहुत जरूरी है कि ये problem मैंने खुद choose करी है, and उसका solution भी just by the way उसी script में होता है. तो हम उसी स्क्रिप्ट में से वो सोल्यूशन निकालते हैं, एंड वाया द कम्युनिकेशन, द गाइडेंस दैट कम्स, वो हम उस पर्सन के साथ शेयर करते हैं. अब उसमें इट कैन बी मल्टीपल थिंग्स. इट कैन बी आपको कुछ हील करने की जरूरत है, आपको शायद आपके एंसेस्टर्स कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं. इट कैन बी जस्ट सिंपल थिंग्स लाइक इस करंट सिचुएशन से आप बाहर आ जाइए, जस्ट स्टेप आउट ऑफ इट. इट कैन बी सो सिंपल, बट आप वो चीज खुद नहीं सुन पा रहे हो, सो हम आपको थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स और थ्रू दिस रीडिंग वी काइंड ऑफ हेल्प यू
to understand what your problem is and give you the solution it from the same space. So there's no like Jyotish Puja, no nothing like that in this field. This field is all about connecting to yourself and working with your own energy, because that is very, very important. Correct. So can you just give me more insight on what is Akashic reading? Akashic reading, Akashic records, like I said, is the soul library, right? जहाँ पे हमारे सारे records हैं. तो जब हम इसको access कर रहे होते हैं या जब हम इस चीज को tap in कर रहे होते हैं, it feels like as if, हम एक बहुत बड़ी book में pages पलट रहे हैं, right? It actually feels like that. And it's like that place where all the data is stored. So I can access that and even figure out आपने पास्ट लाइफ में क्या किया, या आपकी ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. Take any small example, like, say fear of pregnancy. Okay, just recent, I'm just going to take, somebody came to me with the fear of pregnancy. It's because उनकी लाइफ में ऐसा कुछ कभी हुआ था जहाँ पे she kept losing babies, तो उनको ये लग रहा था कि मेरा कभी बेबी होएगा ही नहीं. So now where do we get this information from? We get it from the Akashic records. Akashic is basically Hindi में आकाशा. So it is an etheric space, etheric library. कोई physical जगह नहीं है कि मैं आपको वहां लेके जा सकती हूँ. But ये एक etheric space में एक आप बोल लीजिए imaginary library है जहाँ पे ये सारे records, ये सारा data, ये सारी information stored होती है. ये information सबको accessible होती है. You have to be ready to receive it. Okay, it's not only I can access it or only you need to learn it to access it. You can actually get into your own records. You can read your own records just simply by being open to the fact that I'm willing to receive the guidance from that space. And that intention itself does a lot of job for you. आपका 50% काम वहीं हो गया. Wow. So I mean, there you get a lot of guidance, and then you can come out of your fear as well. So when a person should take help from a person like you, when जहाँ पे मतलब when do they realize कि मुझे ये चीज की help चाहिए अभी? I think they realize when they know, like some people are in awareness and they realize that, okay, it's not going well in my life now and I have to do something about it. Some people don't realize it. Some people just keep saying it, everything is fine, but something is not right? And for some people, they may actually be seeing major situations in their life, like repeated, losses. They may be seeing a particular pattern coming up. They may, actually physically experience problems even in their body. Correct. And sometimes your body problems are also not related to the medical field. I mean, I'm a perfect example of this. But it could actually be some block energetically that is showing up in your life. Because, this is also proved scientifically. Epigenetics has already proved it, right? आपकी gene study होती है, तो आपकी genes में emotions भी transfer होते हैं. Like we say कि her father was a doctor and so she's a doctor, or, the doctor runs in their, field. So if positive things are passing on, understand something that didn't work for somebody is also getting passed on in the genes, right? So that is also a possibility that can show up in your life, and you might want to, work on that, because you might feel कि, body ही नहीं साथ देगी, तो मैं ये money का कैसे करूंगा या काम कैसे करूंगा. So the symptoms can show up in any way. It can be a physical symptom, it can be an emotional symptom, it can be a financial symptom, it can also be a spiritual block where you feel very fearful of all these things. So blocks can be at any level of your life. So I've heard that, when I was doing this pranic healing, I've heard that, you need to cut the cords for anything that you feel that it's not working for you. So how real is that? That is real, because what is cords? What is cords? Cords is basically, आज आपने और मैंने बात करी, हमने एनर्जी एक्सचेंज करी है, राइट? तो अब हमारे बीच में एक एनर्जेटिक कॉर्ड बंध गया है, राइट? सब्जी वाले को मिले, उनके साथ भी एनर्जेटिक कॉर्ड आपका हो गया है. आपने वहां जाके भैया इतने में दीजिए और इतने में मत दीजिए, वो भी किया, आपका एक एनर्जेटिक कॉर्ड वहां पे बन चुका है. अब हमें वो कॉर्ड्स को कट करना होता है जो हमारे लिए बहुत हैवी हो जाते हैं. सिंपल भाषा में मैं समझा रही हूँ. जो चीज हमारे लिए नहीं काम कर रही है, उन कॉर्ड्स को हम कट करते हैं.
एंड व्हेन वी से कॉर्ड कटिंग, वी बेसिकली इंश्योरिंग कि अब वो एनर्जी मेरी फील्ड में ना आए और मेरी एनर्जी भी उन तक ना जाए. That is all. That is, what we say as cord cutting, or what we say as, dealing with the energetic cords. It's basically जो energy हमने deal करी है वो अब intermingle नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में एक रुकाव या अटकाव लेके आ रहा है. एंड आपको वही चीज को सिर्फ अपनी लाइफ से हटाना है. इसका ये मतलब नहीं कि आपके सारे अच्छी एनर्जीज भी वहां से निकल जाएंगी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव अ फियर दैट कॉर्ड कटिंग किया तो ये पर्सन ही मेरी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी. ऐसा नहीं होता है. अंडरस्टैंड, ऊपर जो बैठा है वो हमसे बहुत ज्यादा स्मार्टर है, राइट? एंड दे नो, दे आर गाइडिंग you, and they only cut or they only take away those cords which are not working in our life. The ones that are working will still remain, so that person can exist after that in your life. But आप उस person को अब वैसे नहीं डील करोगे जैसे आप कर रहे थे. आपको शायद उतना गुस्सा, उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, या वो इमोशनल चार्ज नहीं रहेगा आपकी लाइफ में. पर्सन फिर भी रहेगा. Okay. So, this entire journey of yours, I'm sure, लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता है. What is soul-led guidance? What is healing? People generally feel that healing is kind of a weakness, whereas you keep saying that healing is a part of your leadership, to enhance yourself. You have always told that, आपको अपने आप को choose करना चाहिए, right? When you say this, do you really think that many people agree to that? No. People don't agree to this. Firstly, let's start from within. I mean, when I got into it, I also judged myself. I was like, मतलब मैं अब टैरो और ये सब से अपनी लाइफ ठीक कर रही हूँ, मतलब मैं करना क्या चाह रही हूँ अपनी लाइफ में. And choosing yourself, Nirali, does not come easy. It really comes with, I think, a lot, because I'm going to make it a little specific to women. I don't know how it works for men, but I know it's hard even on them. But, we are conditioned to believe that we come after everybody else. Okay, but आप एक्चुअली में सोचिए, जब हम शिवा शक्ति की बात करते हैं या हम शक्ति की बात करते हैं, देवी एनर्जीज की बात करते हैं, तो आपको सच्ची में लगता है वहां ऊपर जहां पे भी हमारी देवियां, हमारी शक्तियां बैठी हैं, वो ऐसे घूंघट में मेकअप लगा के और ऐसे ज्वेलरी पहन के बैठी हैं? आई मीन, लुक एट इट वेरी प्रैक्टिकली. जो आपको ये माँ लक्ष्मी एंड माँ दुर्गा, इन सब की इमेज पता है, क्या आपको रियली लगता है वो ऐसे बैठी हैं ऊपर? दे आर, that is a form human has made of them. So Shakti was never supposed to be sitting like this with all this on herself. Shakti was, the word itself says power, right? But long time back, okay, somebody somewhere, some people thought that this is not working right and man should, take over. So we started believing in masculine energies or male dominance. There was never a dominance. The universal law states man and woman are equal and complementary to each other. This is a law stated by the universe, not by me, and it's used in many books, by many healers, by many masters as well. And this is what actually life was. You look at Shiva Shakti also. Does Shiva say that, just because Kali's image on top of him makes him lesser? No, he's allowed that to take place. So we have to be in allowance of the fact that क्या हम actually में अपने आप को choose करने की permission दे रहे हैं? हम तो ऐसे conditioned हैं कि अगर घर में guest आ जाएं तो उनको खाना खिला के last में खाती हैं, क्योंकि हमको तो allowed नहीं है, right? And जब मैंने अपने आप को choose करना start किया, बहुत छोटी सी चीज थी, but when you make really good things at home, you of course want to also enjoy them, but you're so conditioned, मेरे को देना है, मुझे लोगों को देना है, I have to give it to others, right? So the one small shift I used to tell my house help also is, ये निकाल के यहाँ साइड पे रख दो, मैं बाद में आके खा लूंगी. My husband's like, how cheap, you're doing this when you have people coming over. And I said, you know what, people are coming over, I have done the effort, it's my मेहनत, अब मैं उसमें से एक बाइट तो खा ही सकती हूँ, right? So ये बहुत छोटी सी चीज थी, and of course nobody took it badly, but people don't even do this. They don't. They will, you are so conditioned to believe that if you don't give,
you won't receive. Yeah. अगर मैंने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करेंगे. अगर मैंने मेरे हस्बैंड का ध्यान नहीं रखा, वो मुझे प्यार नहीं करेगा. अगर मैंने एक सर्टेन वे में नहीं बिहेव किया मेरे इन लॉज के सामने, तो मैं उनके सामने नहीं बेस्ट बनूंगी. सो बेसिकली द कंडीशन सेज दैट आई हैव टू गिव टू रिसीव, एंड women बिलीव दिस, बट एक्चुअली वी आर नेचुरल रिसीवर्स. Correct. और हमने हमारी रिसीविंग ही बंद कर दी है. Exactly. So that's why we're not choosing ourselves, because what we're doing is we're choosing everything else that will say I can become this. But the day you say I'm going to put myself before, and nowhere we're saying become selfish. Yeah. Do it with love. Nobody is telling you किसी के ऊपर पैर रख के, किसी की लाइफ खराब करके आप अपने आप को ऊपर करो. No, that's not the concept here. That's not the idea here. The idea is कि आप अपने आप को भी चूज करो और अगले को भी देखो. Agree. Right? And उसको बैलेंस में लाओ. ये नहीं कि you're becoming a rebel also. Now I'm just going to do my own thing all my life. No, that's not what we're trying to say here. Choosing yourself comes with just simple small steps in your own day. Just try it. The whole day you've been out. If you can just ask yourself for 5 minutes, you see how much guilt you'll do. First few days you'll be like, oh my god, my child is calling me. Oh my god, I have to do this. Oh, I have to do that. 5 minutes. Can you just be and breathe? And that itself will actually tell you. Women in India are conditioned, right? And they have It's not just India, I'll tell you one thing. It's all over. It's all over. So it's not just India, and this bubble broke for me also very recently when I had somebody come in from US who said that I can't do this because, my husband is going to say this to me. And I'm like, you face the same problem as us? Like, in my head, I was like, you face the same problem as us? And I have like 4 children. I was like, I get it, but you can still give yourself, I'm just telling you to do 20 minutes of this process. And she's like, 20 minutes is a lot. And that actually gave me a realization कि हम वो सब एक ही बोट में हैं. कोई प्रॉब्लम ऐसी डिफरेंट नहीं है. And there is no harm in choosing yourself. Absolutely. It should be out of love, not out of guilt. Correct. If you're choosing yourself out of guilt, you still need help. You have to do this, and it's a process you have to do every single day. आज किया कल नहीं, it's not like that. Then they're doing it because it's kind of a compulsion for them to do it, right? At the end of the day वही हो जाता है ना कि यार खुशी से नहीं कर रहे, ये मेरा जॉब है, मुझे इस तरीके से इसको करना है. Right? Have you come across people who say that spirituality is just for the chosen ones? Yeah, a lot of times people even say spirituality is only for the rich. Okay, so chosen ones becomes that, because in our society, chosen word, पहले तो ये word choose and choice is something जो हम लोगों को आता ही नहीं है. Okay, we have never been brought up to believe we can have choices. We have decisions. You make a decision and it's like पत्थर की लकीर. Okay, and उसके बाद there is no turning back, क्योंकि अब वो पत्थर की लकीर बन चुकी है. Ideally, you make choices. A choice that works for you, a choice that doesn't work for you. If you look at it like that, your life will be a little more simpler for you. क्योंकि जब choice है, आज अगर मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी ये choice है, आज नहीं काम कर रही है, क्या आप एक दूसरी choice बना सकते हो? It will sound lighter to you. Versus I say, आज आपने decide किया है, कल आप कुछ और decide कर सकते हो? You'll be like, decide किया है ना, तो अब how can I go back on what I have already decided, right? So when we speak of, only the chosen ones, I think that's not true, because in the beginning when we started, I told you, all of us are intuitive, right? So somebody is listening to their intuition and somebody isn't. Yeah. So that doesn't mean it's for the chosen ones. Right? Healing, spirituality, being on this path does not mean that it can only come for people who have third eyes open or, none of that. It's simply, even when you're listening to your body is saying, don't do this. ये मत खाओ, हम फिर भी खाते ही है ना. Overeating तो सभी लोग करते हैं. That itself is also intuition. That is your body telling you, stop, don't do this anymore, but you still do it. True. So a lot of people think chosen ones is a concept also defined by, worth, money, value, etc. What I'm just going to say here is that all of us are born with our third eyes open. Yes. It gets shut over a period of time when we keep getting conditioned due to society, parents bringing up, etc., etc. And then you have certain belief systems that are formed. But if you are still able to listen to your own intuition, gut feeling,
the simple word gut feeling, or if you're able to just listen to your body, you are still the chosen one. And I genuinely, every day, there is one line I always say is, thank you for choosing me. Because they chose me, I honored it. So I also thank myself that thank God I opened my eyes at the right time. Otherwise, जैसे मेरी गाड़ी चल रही थी, चल ही रहती. So you're talking about intuition, right? How do you explain this concept of energy, intuition, healing? There is much to it, right? So how do you explain all of this concept? I think for everybody watching this, in just simple language, energy, hot, cold, गरम ठंडा, वो भी एक एनर्जी ही है, राइट? इमोशनली देखा जाए, प्यार डर, वो भी एक इमोशन ही है, और वो भी एक एनर्जी ही है, right? My mentors put it very well, and I'm going to use her example here. Power of love and power of fear. What is the emotion, energy you want to go towards? Ideally, there is power of love that exists. The power of fear is what humans are instilling, right? So, energy is that. Intuition is something that comes from within you, जो आपके अंदर की आवाज है, जो आपको बोलती है ये करो या ये नहीं करो, पर आप बोलते हो नहीं मैं पहले एक पंडित जी से पूछ लेती हूँ, नहीं पहले मैं इनसे पूछ लेती हूँ, मम्मी से पूछ लेती हूँ. दैट्स इट. आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं ऑनर किया है. तो इंट्यूशन वो सिंपल चीज है जो आपको बोलती है आगे जाओ या नहीं जाओ, या ये करो या नहीं करो. एंड हीलिंग इज अ कॉन्सेप्ट विच इज बेसिकली अनियन के लेयर्स जैसे हम पील करते हैं, आपकी भी हीलिंग वैसे ही होती है. इट्स लाइक आपकी सफाई हो रही है, आपका कचरा बाहर निकल रहा है, आपका एक लेयर निकलेगा, फिर आपका दूसरा लेयर निकलेगा. आप जितना अपने आप को या अपने ऊपर काम करते रहोगे, उतनी आपकी सफाई होती रहेगी. एंड दैट इज हीलिंग. हीलिंग डजंट मीन कोई आपको कुछ कर रहा है. Okay, healing, this is the very bad concept. People think, can you heal me? No, I can't heal you. If you are choosing to be healed, you will be healed. Agreed. You need to make that choice if you want to be healed. Right? And so healing, कोई आपको कर नहीं रहा है, कोई आपको दे नहीं रहा है. हाँ, हम आपको एनर्जी हीलिंग देते हैं. वी गिव यू अ लिटिल एनर्जी फॉर अ बूस्ट. वी कांट, हम आपकी लाइफ ठीक नहीं कर सकते, वो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी सफाई है. लाइक कारपेट के नीचे से झाड़ू मारना पड़ेगा ना, कारपेट अगर आपके घर में है तो तभी आपके घर की पूरी सफाई होगी. सेम वे healing is also the same thing. When you start peeling your layers and go deep within, and where are you going? वो अनियन का भी लास्ट कोर एक पहुंचता है, राइट? सो इस पूरे लेयर्स में से आप यू विल रीच द कोर ऑफ व्हाट योर ट्रूथ इज, जो आप रियली में यहाँ इस अर्थ पे आए थे. ये सब जो आप बाद में कर रहे हो, इसके साथ झगड़ा, वो ये वो, ऑल दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट योर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर. But what your truth is, what you really are, only comes when you actually peel all these layers, these masks that we have when we're living here. Correct. Do you really think this spirituality and this healing and all of it is quite connected to our past life and our ancestors? Yes, it is, because I feel that it's all coming together. It's all basically, like I told you, it's a part and parcel of the whole bag. And see, ancestors, it's almost taken us 400, 500 ancestors to be here today, right? So to say that, it's not a part of us, I think would be actually wrong, because you're dishonoring the fact that you came here through such a long process. So many people took birth before you, and therefore you are here today in the same lineage. Past lives, because I do have a knowing, and I do have a sense that, this is not the first time we're all coming here. Right? So all of this is a part of it's all together. You can't really separate it. You can't really put it in like different boxes. Just the fact that to access these or to know more about these, there are different methods. There are different ways we can do it. Right? You can do it through meditation. You can do it through a past life healing. There's family constellation. There are many different means through which we can go here. But this is a part and parcel of what you are today, because every problem that you have in your life or every challenge that you have written is coming from 5 main sources. One is your womb memories, जब हम birth के process में होते हैं. Second is your inner child, 0 to 21 years of age. Third is your past life.
फोर्थ इज योर एंसेस्टर्स, एंड फिफ्थ इज हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. सोल लेवल पे हम कॉन्ट्रैक्ट लिख के आए कि I will marry this person at this point of time, or whatever contract you have made. So like you make a contract on earth, जैसे हम एक घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सेम वे हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट हम सोल लेवल से बना के आते हैं. सो सिर्फ पास्ट लाइफ एंड एंसेस्टर्स नहीं है हमारी लाइफ में. ऐसे 3 और द सोर्सेज दैट आई जस्ट स्पोक ऑफ आर ऑल आर सोर्सेज विच मेक अस व्हाट वी आर टुडे. Your belief system, how you are thinking, what you are doing is coming from all these things. And I think it's very important for us to know these, or for us to work on these, because you're literally dealing of that problem from the core of it. आप literally में उसकी रूट तक जा रहे हो, और जब तक आप रूट तक नहीं जाओगे, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो रूट कॉज बताता है ना कि आपके फीवर का रूट कॉज ये ब्लड टेस्ट से पता लगेगा. करेक्ट? ब्लड टेस्ट में कुछ निकलेगा, वो आपको बताएगा. सेम वे यहाँ पे भी है. So we actually call ourselves spiritual doctors, like me and a couple of my friends who are in this work, we say we're spiritual doctors because we're actually telling you the root cause of your problem, where it is coming from, and the best part is solution भी वहीं होता है. I agree to this, when you say that, soul level पे भी तुम्हारा कोई connection होता है. So sometimes you meet people in a way wherein you feel यार इससे बड़ा soul वाला connection है. Right? I mean, you get that intuition, right? Apart from all this materialistic things, sometimes you feel कि नहीं यार, they have kind of, a part to play in your life. They come in your life. There are a lot of changes that happens in your life. And, sometimes you feel कि कुछ तो रहेगा, like, past life कुछ connection रहेगा. So I generally, I believe a lot in healing, intuitions and all of it, spirituality and all. Sometimes I get that calling. Do you really think that is kind of for real, or is it just... Absolutely it is for real. Absolutely it is for real, because when you feel very connected to a particular person, जैसे आपने बोला कि वो आते हैं आपकी लाइफ में और बहुत चेंजेस भी आते हैं, बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको बोला, वो आपका शायद सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा. वो आपने शायद ऑलरेडी एट सोल लेवल डिसाइड किया होगा. एंड फॉर दैट मैटर, मोस्ट ऑफ आवर पीपल, वी आर ऑल अ सोल फैमिली हु चूज टू कम टुगेदर. क्योंकि आपको अकेला नहीं आना है. अगर आप अकेले आओगे तो आपको वैसे ही डर है, मैं यहाँ पे आई विल बी लोनली, राइट? सो वी चूज आवर पीपल एंड कम. लाइक द फर्स्ट थिंग, वी चूज आवर मदर. It's a concept that I think I learned very early when I was in, when I got into spirituality and I got into healing myself because of all the pregnancy troubles and everything. The first thing I got to know was, the soul has chosen me. I have not invited that soul into my life. That child who's in my life has come because she chose me. So the one thing that, they used to tell me to do that time was keep thanking her and telling her, thank you for choosing me to be your mother. We've just done the physical act of inviting. हमने सिर्फ यहाँ पे उसको, उस चीज को हमने रियलिटी में we could make it happen. But अगर वो हमें चूज ही नहीं करती तो हम उसको लाते ही कैसे? So ये हमने सबने सोल लेवल पे चूज किया होता है. जैसे मैंने आपको बोला, हम वो सोल स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम सबसे पहले हमारी मदर को चूज करते हैं कि इस मदर के थ्रू मैं यहाँ पे आऊंगी या आऊंगा. फिर हम हमारा जेंडर, मैं कैसे दिखूंगी, क्या ये वो, फिर हम बाकी सारे लोगों को चूज करते हैं. थैंक्स टू द मदर, एक फादर भी कॉम्प्लीमेंट्री है ही. सो एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव अ फैमिली, बट योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर, who you're going to work with, who you're going to have a long term, relationship with, all of that हमने चूज ही किया है. नहीं तो हम उसके बिना आ ही नहीं सकते. नहीं तो यहाँ आके आपको लगेगा मैं यहाँ की हूं ही नहीं. So a lot of people come here and feel, I don't belong here, I need to go back, and then they keep wanting to, say that I should just end my life, because they're not able to make sense of their connections on earth. Correct. So when do you understand that, you are born to do something, or you have a purpose in your life? When do you realize this is when I think it comes to you on its own, because I don't think there is a time like, okay, if I have to say it in the way I realized it is, there was a divine timing in my life. एक टाइमिंग ऐसी मैंने ही चूज करी थी, जो मेरे गाइड्स, मेरे मास्टर्स ने, they helped me to, act on that. And you realize, basically, this is more like a question on, I think soul purpose. You realize your soul's purpose when you actually start taking aligned action. जब आप एक्शन उसी अलाइनमेंट में लेते हो,
उसी पाथ पे लेते हो, तब आपको रियलाइज होता है नहीं यार मैं यही इसी के लिए ही आई थी, राइट? लाइक मेरी जर्नी में पहले मैंने लॉ किया, मैं टीचर बनी, फिर मैंने बिजनेस भी किया। मैं सब चीज में नाखुश थी, मैं हर चीज में बोलती थी इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है, इसमें पैसा है पर इसमें टाइम बहुत लगता है, इसमें तो पैसा ही नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई ही हुई। बट जैसे ही मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, वेयर आई स्टार्टेड गाइडिंग पीपल, आई स्टार्टेड डूइंग रीडिंग्स, सेशंस, आई डिड नॉट केयर अबाउट द फैक्ट कि मनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है वो भी नहीं देखा। आई जस्ट न्यू आई एंजॉय दैट थिंग सो मच कि मुझे वो अंदर से एक कॉलिंग थी कि मैं इसी के लिए ही आई हूं यहाँ पे। एंड वो जब आपको फीलिंग आ जाती है तो आप समझ जाओ कि आपको आपका सोल का पर्पस या आपको आपकी कॉलिंग मिल गई है। Absolutely, I totally agree to this. I mean, my journey has also been such, right? I've shifted from doing lot of many things and then to ending up doing something which I feel it's more valuable. There is a lot of learning involved, right? I have heard, or maybe it can be just a myth, that people say that spirituality, a person who's spiritual doesn't earn more. Do you really think that's a fact? No, I don't think that's a fact at all, because I know a lot of spiritual people who are making a lot of money, and money is एक एनर्जी है। कौन मनी थोड़ी बोल रहा है मुझे सिर्फ टाटा अंबानी के घर जाना है, राइट? मनी ऐसा नहीं बोलता है। मनी है जीरो पॉइंट ऑफ व्यू, and money is basically something that, like I told you in the beginning, is a energy, is a thing that we have come here on earth to enjoy it. So make the best of it. Everybody is meant to experience materialistic pleasures if you are a human. So, and money is a very important part of spirituality. Yeah. So I don't think that spiritual people don't earn. It's just a block that we again have, because a lot of people have been conditioned to believe कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते हो। But I think after 2019, you rightly said, लॉकडाउन के बाद काफी लोगों ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना झुकाव रखा है। कोविड इटसेल्फ क्रिएट किया गया था। यूनिवर्स, मास्टर्स, गॉड्स, गॉडेसेस, आपको उनको जो नाम देना है, मेड श्योर दैट हैपेंड सो दैट द चेंज हैपेंस। बेसिकली ये प्रोसेस एक्चुअली 2012 से स्टार्ट हो चुका था। 2019 तक वो यहाँ तक पहुंचा जहां पे एक ऐसी चीज क्रिएट करी गई, क्योंकि हम एक नए अर्थ की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम लोग सब 3D में थे, अब हम सब 5D पे जा रहे हैं, विच इज बेसिकली अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या हम उसको बोल सकते हैं एक हायर अवेयरनेस, एक मोर वैल्यूएबल सोच, सिंपल भाषा में बोलें तो, राइट? एंड उस तरफ, उस फ्रीक्वेंसी की तरफ जाने के लिए ये चेंज जरूरी था। जो इस चेंज के लिए रेडी नहीं था वो 2019 में ही चला गया है। Those people have dropped, right? Yeah. You can experience this even on a daily basis. Let me tell you that your frequency and vibration is changing as you keep rising. Do you have the same friends you had 10 years back? All those people are still stuck to you. Not really. So your circle gets very minimalistic. वो छोटा होता ही जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर राइज होगे, आपके ये सब लोग पीछे छूट जाएंगे जो आपकी उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते हैं। बहुत लोग, इवन मैरिजेस में ऐसा होता है ना, बोलते हैं हम 20-25 साल के बाद हमारा स्प्लिट हुआ। एवरी टाइम इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ टॉक्सिक सिचुएशन, इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज अब उनकी वाइब्रेशन ही वो नहीं है। उन एक जना या तो बहुत ऊपर आगे चला गया है, या एक जना बहुत ही पीछे छूट गया है। इट कुड बी एनी सिचुएशन, एंड शायद वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी था। बट द फैक्ट बीइंग, अगर वाइब्रेशन मैच नहीं होगी तो आप नहीं, you can't gel, you will not be able to be there. And the same thing happened in 2019. People who were not ready to change, who were not ready to get used to the new earth frequency, वो सारे पीछे छूट गए, हम सारे आगे आ गए हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होएगा, ये सिर्फ 2019 की बात नहीं है, राइट? ये आगे भी अब आने वाला है। और ये आप सिंपली देख लीजिए, टाइम कितना फटाफट जा रहा है। 25 खत्म हो गया, 26 months भी खत्म, रियलाइज ही नहीं हुआ है। Time has started moving faster because that is how the new earth is. We're not, look at the children today. We keep talking of, how smart children are being born. Of course, they have to be. They are more intuitive, they are more sensitive beings because एक नए अर्थ की तरफ जा रहे हैं। वो पुराना लाइफस्टाइल नहीं चलेगा अब।
And I think change is the only constant. We've heard this, and I think that's the only way forward as well. Also believe that spirituality brings in more abundance in your life. Yeah. Right? It can enhance what you were before and what you are right now. A lot of spiritual people. So spirituality को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, right? सोचते हैं कि नहीं ये गुरु है या फिर कोई भक्त है जो spirituality के मार्ग पे चल रहा है. So it's quite a different term which has been used for a purpose. But I believe that, people who get into that healing process or spirituality can bring in a lot of abundance, because then you start understanding your energies. As you rightly said that, अगर vibrations match नहीं होगी तो वो soul contact तुम्हारा ज़्यादा चलेगा भी नहीं. Right? People split because of your vibration. So it's very important to understand. Right? So, Kritika, we had amazing conversation. Throughout the conversation was very much connecting. A lot of learning was been involved. I really want you to throw a last message for our viewers who are struggling in their life. Not only women, because I personally believe that, males are also struggling. No, a lot of them. A lot of them. Because as you rightly said in one of our conversation, they are always been treated as a masculine energy. Right? So, उनको हमेशा से tough रहना सिखाया गया है. Whereas women's are always been emotional, right? So, one last message for them where, if they're struggling in their life or they really want to get out of it, what help is required, or how can they understand, there is something that they have to change in their life? I think the first thing would be that ask for help. Because, like you said, the men will not even reach out for help. But I'm glad to share, I have a lot of people who come, men come for sessions, come for readings. Now, reading sessions is not the only thing. Ask for help in your life. आप पहले एक पॉइंट पे आइए जहाँ पे आप एटलीस्ट किसी से मांग सको ये हेल्प. इट कुड बी अ फैमिली मेंबर, राइट, कि मेरी लाइफ में ये नहीं ठीक चल रहा है, मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए, राइट. एंड आई थिंक द नेक्स्ट थिंग वुड बी टू एक्सेप्ट. आप एक्सेप्ट करिए कि कोई प्रॉब्लम है. अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो हम बदलेंगे क्या? जब आप मानोगे ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, एंड टू कीप सेइंग इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट एवरीथिंग इज फाइन इन माय लाइफ is also called spiritual surpassing. You are just saying, I'm living a very good life, and अंदर ही अंदर हर रोज रो रहे हो उसी ऑफिस में जाके. So that means something is going wrong, and to come to an acceptance of that is itself a very big change. Acceptance actually आपकी 40 to 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि फिर आप ओपन हो जाते हो वो चेंज या वो रेमेडी को यूज करने के लिए. अगर आप वो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो दवाई का कोई असर पड़ेगा? दवाई हम आपको दे देंगे, अगर आप लोगे नहीं, सेम थिंग. So the thing is, acceptance of that is a very big key, I think, to changing, coming out of a struggle, like you said. And of course, then we have people today, I think there are so many people who have moved on to, from corporate jobs, from so many things, getting into healing, astrology. So many modes are there today to help you. So there's enough data, and ChatGPT is superb, guys. Just reach out. Trust me. AI has, as much as people are, talking crap about it, let me tell you one thing. It's also helping people. So you definitely can transform your life if you're ready to accept that there's a problem, and then you're ready to ask for the help. You are on the right path. In fact, I did this. I asked ChatGPT, adding my date of birth and my place and everything. I had certain questions to ask my future, and it gave me a very good reading for my present and future both. So I agree to this, and of course you need to ask for help. That is something which is very important. Without help, no one will understand that you really need a help. आप अंदर ही अंदर अपने आप को श्रिंक करते जाओगे, एंड जितना आप श्रिंक होगे उतना आप अपने आप को चूज नहीं करोगे. एंड आस्किंग फॉर हेल्प
is the biggest strength, क्योंकि that means आप अपने आप को choose करने के लिए ready हो. क्योंकि that itself, I'll tell you, is a very big deal for people to do because they don't know it. Nobody has ever told them that, you are of a value. There is a value to you. There is a meaning to you. And, you are entitled to something. लोगों को ये नहीं पता है. So I think that will really, really change things. And like you said that, your future can become better. The action begins in the present. Yes. So you need to change your present to make your future better. It doesn't start कि आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है 10 साल बाद ठीक हो जाएगी अपने आप. ऊपर से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि आपकी लाइफ मैजिकली ठीक हो जाएगी. कीप डोर्स ओपन फॉर मैजिक. आई एम अ फर्म बिलीवर इन दैट. But like I said, action will still have to be taken. That asking for help will still have. Yeah, rightly said. And then you get those intuitions. Yes, absolutely. Right? You need help and you need to go and opt for it. People will come your doorway. Yeah. You don't have to do anything. The fact that you just sit today, just tell yourself just one simple thing. I'm in a problem. I need help. Show me the help. इतना simple है यार. जैसे एक friend से बात करते हो. Same वही है. कुछ difference नहीं है इसमें. Thank you so much, Kritika. We are heading to the last segment of our show, that is rapid fire round. Okay, so whatever questions I'm going to ask you, you need to answer in one word. Done. Are you ready for it? Go for it. All right then. One sign someone needs healing but avoids it. When they say I'm fine. Truly said. One daily practice that raises your frequency. I think for me, it's chanting. Yeah. One belief that blocks most people energetically. One feeling. Yep. That blocks them. I think it is when they don't let their emotion be felt. गुस्सा आ रहा है पर वो गुस्से को feel नहीं करने देते हैं, उसको दबा देते हैं. But do you think that it burst out in a different way? वो होगा eventually, but तब के लिए आपने अगर अपने emotion को नहीं feel करने दिया, तो आपने अपने आप को block कर दिया है. Correct. Is asking for help a weakness or strength? Strength, major. 100%. One thing people should stop doing in the name of spirituality. Oh, I love this. Using the word, I'm a spiritual person and so I know my problems very well is itself, I think, something people misuse, okay? And I think the word abundance and manifestation, they misabuse it, they abuse that word in the name of spirituality and they're doing anything else, everything else but what they're actually meant to be doing. So, yeah, I think that is a sign. Thank you so much. It was very candid and as I said that, there was a lot of learning involved, a lot of exchange of learning happened over here. And I also got to know a lot about spirituality, healing, intuition, and it is important to understand the past life as well and then how your soul has been led in a guided way. So thank you so much once again. One last message you want to say for Ek Soch platform? I think I will say just as a message to close this beautiful conversation and I think very, very, kept real by Nirali. So thank you so much because this was, I think, much needed. And just a general message to all of you sitting, watching this, whenever that you're watching it, अपने आप को please choose करिए, okay? आपकी life में एक चीज है जिसके साथ आप आए हो, जो ये बॉडी है, राइट? आप वो हर चीज का ध्यान रखते हो एक्सेप्ट अपनी बॉडी का. आप अपनी ज्वेलरी, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी, हर चीज को इतनी सेफली रखते हो. आप अपने आप को जब इतनी सेफली रखना स्टार्ट कर दोगे, आपकी लाइफ जहां भी हो, आज आप जहां पे भी हो, वो सिर्फ ऊपर ही जाएगी. यू विल ओनली कीप ग्रोइंग बिकॉज यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ समथिंग दैट यू कम विद एंड दैट यू आर गोइंग टू गो विद. So I think choosing yourself, taking care of yourself, whether it is physically, emotionally, mentally, it is the best service you can do to your own self. Thank you so much. I truly agree to you. To all the viewers, it's very important that you choose this self-first philosophy. Because most of the time what we do is like being male, female. Males भी कहीं ना कहीं अपनी family को choose. Correct. Females भी कहीं ना कहीं
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जॉब को चूज कर दिए, बट कहीं ना कहीं हम सब भूल रहे हैं दैट वी हैव टू चूज आवरसेल्फ फर्स्ट टू कीप ईच अदर हैप्पी and to evolve and to grow. So it's very important to understand this concept of keeping self first, understanding and learning to say no to what doesn't align to you. That's how you heal, that's how you grow. And if you're struggling in your life, you're not able to understand the purpose of your life, or if you're not able to come out of your fear, you know whom to approach. Kritika Khurana. Thank you so much, Durrani. Thank you so much. Signing off for today. Ek Soch, one idea that changed your life. Don't forget to like, share, and subscribe.